Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My lovely educators, let's discuss life education, its importance, and 10 core skills given by WHO, World Health Organization. Though it's a part of B.Ed and M.Ed program too, see, we have been teaching life skills to our students at various stages. Recently, Life skills curriculum has been made mandatory by CBSE, and we have been teaching through various case studies, through various stories, through different activities to our children. So we should also understand what is the importance of teaching these life skills, how they can help us teach effectively to make teaching learning process more effective, more engaging, and helping our children to relate their knowledge with the daily life, right? So let's go ahead with that. So, my dear educators, before we discuss, we will talk about a few questions that have been asked in the previous years. These questions have been asked in different exams for B.Ed and M.Ed curriculum. So accordingly, you will have an idea कि किस तरीके के जो questions हैं वो आपसे पूछे जाएंगे. For Punjabi University Patiala, you are very much familiar. Like what kind of questions are asked? There are two sections with long answer type questions where lengthy questions are being asked, where you have to answer, right, for you have to write around 5 to 6 pages for each answer. 10 marks questions are there, lengthy detailed explanations are there, right, and a few short notes are there, right? So these kinds of questions are being asked, right? No multiple choice questions, no objective type questions are there. So let's talk about a few questions that have been asked in the previous years. How do life skills help in the development of a balanced personality? So you should know about the importance of life skills, right? That we will be discussing today. And what are the core life skills as prescribed by WHO? These also we shall discuss in detail today. Explain classroom discussion is a method to enhance life skills. How can role play enhance life skills? So, my dear educators, we shall talk about different strategies to foster different kinds of life skills in our upcoming videos. So from there, you will be able to write in detail about the different kinds of strategies to foster different skills. And apart from it, you will be able to write even short note on different kinds of strategies. What are the various kinds of interpersonal relationships? What are the various activities that can be performed in the class to develop self-awareness? The ability to communicate effectively with the people is essential for success. Comment on that. So these are the questions that have been framed on different core skills, right? We shall be talking about 10 core skills. So these questions, these short notes have been asked on those different core skills. Discuss various stress management techniques for used for coping with stress, and explain the process of decision making and decision mapping using problem trees. Explain the concept of empathy, define critical thinking and its steps, discuss the importance of problem solving skills, how will you develop decision making skills in the students, and how can teachers make teaching effective through life skills. So, my lovely educators, all these are the short notes that will be asked to you depending upon, based on the different life skills that you are going to learn, right? So, here you go, my dear educators. These are the top 10 core life skills recommended by WHO, that is World Health Organization. And here they are: problem solving, critical thinking, effective communication, decision making, creative thinking, coping with emotions, coping with stress, empathy, self awareness, building skills, and interpersonal relations skills. So, my dear educators, so you should know about these 10 core skills, though we shall discuss in detail about each and every skill in the upcoming videos. But when you will be asked a question, like you need to write a detailed explanation about 10 core skills that will be asked under 10 marks question on the long answer questions. तो उसमें आपको हर एक स्किल के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स लिखना पड़ेगा, वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट? सो हियर यू गो. So, my dear educators, these are the different symbols also that are used for different core skills. Like for example, the first one is for awareness. You can understand somewhere for creativity, relationship,
right? Communication, effective communication, critically, we are thinking something, creativity, right? So these are the different symbols. Okay. So here you go. Three categories for life skills. This question will also be asked like, what are the three different types of skills? Three different types of life skills. So life skills have been divided into three categories. उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सोशल स्किल्स, कोपिंग स्किल्स एंड थिंकिंग स्किल्स. ओके, आई मीन जो 10 कोर स्किल्स हैं वो इन तीन मेजर कैटेगरीज के अंडर जो है वो डिवाइड की गई हैं. फॉर एग्जाम्पल द फोर skills like self awareness, effective communication, interpersonal relationship, and empathy. These four skills have been categorized under the group social skills. When we have to cope, coping skills, coping with stress, coping with emotions, right? These two types of skills are studied under coping skills. When we talk about thinking skills, see, we need to develop our critical thinking. We need to foster our children's, ours critical thinking, creative thinking, decision making, and problem solving. So these four skills are categorized under the category, under the title thinking skills. सो अब आपको पता चल गया कि तीन जो कैटेगरीज हैं लाइफ स्किल्स की, सोशल स्किल्स, कोपिंग स्किल्स एंड थिंकिंग स्किल्स. तो इसके अंडर हम टोटल 10 स्किल्स को स्टडी करेंगे, राइट? सो now, first of all, let's talk about social skills. Self-awareness, right? The first skill that we are going to discuss. Self-awareness focuses on valuing oneself. अपनी value, अपनी पहचान करनी, including our personality, our attributes, हमारे taste क्या है, हमारे likes और dislikes क्या है. By developing attributes like self-awareness, we will be able to comprehend the amount of stress and pressure a person is in. I mean, हमें पता चलता है अपने बारे में, अपने टेस्ट के बारे में, अपनी पॉजिटिव चीजों के बारे में, अपने एस्पिरेशंस के बारे में, राइट? एंड वी डेवलप एम्पैथी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, राइट? सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अपनी पहचान जो है ये बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक यहाँ पर एक लड़की का अगर इमेज है, यू कैन ऑल्सो कंसिडर लाइक एक समिता पाटिल का सॉन्ग है, कोमल है कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम ही नारी है. अपना सेल्फ एस्टीम पता चलता है, अपनी बारे में जानना चाहिए कि यस वी हैव सम कैपेबिलिटीज, वी हैव सम पोटेंशियल्स, उनको रियलाइज करना कि यस. और जब अपने अंदर वो सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है, वी आर अवेयर अबाउट आवर positives and negatives, our strengths and our weaknesses, and then we try to understand, yes, how we will be able to achieve our goal. मतलब कि हम अपने पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं, वी गेट अवेयर अबाउट आवर सेल्फ. और इसमें चाहे हम ये उदाहरण लें, चाहे कोई और एग्जाम्पल लें, द लायन अमंग द शीप, वो एक शेर का छोटा सा बच्चा, वो कब जो बिछुड़ जाता है अपनी माँ से पैदा होते ही, और फिर वो भेड़ों के झुंड का एक हिस्सा बन जाता है, उनके साथ रहते रहते खुद को वो भेड़ ही समझना शुरू कर देता है. फिर एक जब दूसरा शेर आता है तो उसको वो रियलाइज कराता है कि उसकी वर्थ क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. वो क्या है, वो शेर है, वो राजा है, वो कोई भेड़ों के झुंड का कोई एक मामूली सा हिस्सा नहीं है, राइट? तो द स्टोरी ऑफ अ लायन हु रिक्लेम्ड हिज वर्थ आफ्टर रियलाइजिंग हु ही इज मेंट टू बी, हम किस लिए बने हैं. और जब अपनी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में हम जानते हैं, लाइक वी गेट सेल्फ अवेयर, वी नो आवर सेल्फ एस्टीम इतनी डेवलप हो जाती है, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का, राइट, अपनी वीकनेसेस का भी, कि जिसके ऊपर हमें वर्क करना है, उसका ज्ञान हो जाता है ना, तो फिर किसी के कहने पर हम आगे रुकते नहीं है. वी कीप ऑन अचीविंग आवर सक्सेस. किसी की बातों का हम पर कोई असर नहीं होता. हमें बहुत कोई कुछ कह दे तो उससे हमारी सेल्फ एस्टीम जो है वो लो नहीं हो जानी चाहिए, राइट? फॉर दैट वी नीड टू टीच दीज काइंड्स ऑफ स्किल्स टू आवर लर्नर्स. सो आई होप you get to know about self-awareness, what is the worth of teaching this self-awareness. So you will be right the same under this category, right? So my dear educators, the next one is empathy. Empathy, to put yourself in others' shoes. कि दूसरे क्या महसूस करते हैं उसको महसूस करना. Empathy is one of the major tools needed to form a positive relationship among our loved ones and our society. The value of imagining one's life from their perspective can be learned by empathy.
right? Empathy is important because it improves our communication with others and can help us understand and accept others better. It can also drastically improve social interactions, especially between multicultural individuals and societies. See, जब हम दूसरों को empathize करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन बेटर होता है, हमारे रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेटर होता है, राइट? वी नीड टू एम्पैथाइज, राइट? वो एम्पैथाइज करने के लिए क्या है कि हमारे अंदर कुछ जो वैल्यूज हैं, दे आर कॉट, दे आर नॉट टॉट। जब हम ऐसा बिहेव करते हैं खुद, राइट, एंड वी बिकम रोल मॉडल्स फॉर आवर चिल्ड्रन, दे लर्न फ्रॉम अस, राइट, दे फॉलो अस, दे इमिटेट अस, दिस इज हाउ दे ऑल्सो लर्न। हमें उनका जो एक सर्कल ऑफ कंसर्न है, जो वो उनका सर्कल है, जो उनका दायरा है, उसको बहुत एलैबोरेट और उसको बहुत बड़ा करने की जरूरत है, राइट? सो वी शैल वर्क ऑन दैट सर्कल ऑफ कंसर्न। अभी छोटे बच्चे होते हैं, उनका दायरा छोटा सा होता है, दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर मम, their dad, their siblings, the grandparents, and slowly and gradually they get to know about the other relatives. And when they go to their school, they know about their friends, their teachers, right? In the society, in the park outside their play, they know about other people, other children as well. So slowly and gradually, the circle of concern grows. So we need to help them in growing that circle of concern so that they'll be able to empathize more people and enhance those skills. So here you go, my dear educators, let's talk about interpersonal skills. Certainly, when we empathize, we will be able to better develop our interpersonal skills and we will be able to maintain interpersonal relationships better. रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे थे फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए. I mean, life skills they help us to understand the importance of different kinds of relationships. Family, professional life, friends, outside, wherever we are, in any kind of environment where we are staying. So we need to understand the importance of different kinds of relationships and the worth of each and every relationship. उसको maintain कैसे करना है, छोटों से बड़ों से same age group से कैसे deal करना है without hurting anyone's feelings. So for that, we need to know these kinds of social skills. Interpersonal relationships help us to understand, help us to relate in a positive ways while interacting with people, being able to make and keep friendly relationships that are of great importance for our mental and social well-being. It may mean maintaining good relations with the family, who are the most important source of social support. It may also mean the ability to end relationships constructively, right? So कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि कुछ रिश्ते थोड़े से समय के लिए होते हैं, राइट? लेट्स अग्री टू डिसअग्री. बहुत बार क्या होता है कि हम एक दूसरे से अग्री नहीं करते हैं, सेम साथ, एक साथ किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में है, आउटसाइड है, कहीं पर भी है, एक साथ अगर नहीं भी चल रहे, तो लेट्स अग्री टू डिसअग्री. वी आर हैविंग आवर ओन थॉट्स, राइट? कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. ऑलवेज वी शुड नॉट गो अहेड विद एडजस्टमेंट ओनली. लेट्स थ्राइव, राइट? लेट्स मूव अहेड विद ऑन अ पॉजिटिव नोट. तो वो चीजें भी जो है, इफ द रिलेशनशिप्स आर बीइंग एंडेड, दैट आल्सो शुड बी डन कंस्ट्रक्टिवली, राइट? सो here you go. The next skill we are going to talk about effective communication. So my dear educators, effective communication means communication कैसे अच्छा होता है. हमारी सारी skills अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे दूसरे के point को, तभी अपना point convey करेंगे, right? और अपना point convey करने के लिए क्या है, नेक्स्ट जो पर्सन है उसको कैसी लैंग्वेज समझ में आती है, व्हाट काइंड ऑफ जेस्चर्स वी आर यूजिंग, व्हाट इज द एज ऑफ दैट पर्सन, लाइक वो उसका ओहदा, उसकी पदवी, प्रोफेशनल है, पर्सनल है, हमारा उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है, दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज वी विल बी यूजिंग. ओके, सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वी टीच आवर चिल्ड्रन like in the written format on a social media, the different platforms, verbally, like कैसे convey करना है in different platforms. So for that, effective communication means that we can express ourselves both verbally and non-verbally in ways that are appropriate to our culture, our situation. हमारे कल्चर में हो सकता है कोई चीज एक्सेप्टेबल है, बहुत अच्छी है, और दूसरे कल्चर में उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाता. सो अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली, हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली, while in Rome, do as the Romans do, right? We need to follow our culture.
This means being able to express opinions and desires, and also needs and fears. And it would also mean being able to ask for advice and help in time of need. We communicate kaise kare, right? So we should know. And let's talk about 7 C's of communication. कौन से ऐसे points हैं जिनका हमें ध्यान रखना है while being communicating effectively? You can also write it down while you'll be talking about different kinds of core skills. We have to be very, very clear. Clarity is very important and complete. Information should be complete. You know, little knowledge is a dangerous thing. ऐसा ना हो कि आधी information दे और दूसरे के लिए कोई फायदा भी ना हो और उल्टा नुकसान कर दे. And always provide the correct details. Information should be correct to our knowledge, right? So reliable sources should be there for the information that we are sharing while communicating. Concise, crisp, be brief. अपनी बात को पूर्ण रूप से रखें पर बहुत ज्यादा उसको इलेबोरेट नहीं करें, राइट? इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं हो जाना चाहिए. कंसिडरेशन, कंसिडर द रिसिपिएंट्स ओपिनियंस. यस, आप ऐसा नहीं कि आप ही बोली जा रहे हो, लाइक नेक्स्ट पर्सन का जो रिस्पॉन्सेज हैं, उसकी जो रिएक्शंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपना कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीटली अपने कन्वे करना चाहिए. कॉन्क्रीट, बैक इंफॉर्मेशन विद फैक्ट्स. आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसके फैक्ट्स आपके पास क्लियर होने चाहिए, राइट? एंड कर्टसी, रिस्पेक्टिंग द रिसिपिएंट्स फीलिंग. जिससे आप बात कर रहे हैं, व्हाट इज द एज ग्रुप, उससे कैसे बात करनी है. बड़ों से सम्मान, आदर, छोटों से प्यार, और अपने सेम एज ग्रुप से उस तरीके का रिलेशनशिप रखना. इस तरीके से यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद योर each and every group, okay, in the area of your concern, maybe the area of circle of your influence, जहां पर भी आप बात कर रहे हैं, maybe the circle of your control too, जहां जहां पर भी जिससे भी बात कर रहे हैं, तो that will be effective. So here you go, thinking skills. Under the thinking skills, we shall be talking about 4 different kinds of skills, right? Critical thinking, creative thinking, problem solving, and decision making. Critical thinking is an ability to analyze and interpret information in a systematic manner. जो हमारे पास information है, उसको interpret करना, उसको समझना systematically. Critical thinking is highly responsible for influencing and recognizing behavior that can be used to lead a well-balanced life. Critically evaluate करें उसको. Beauty and truth की जब बात होती है, जैसे for example today's ad word, बहुत चीजें हमें लुभाती हैं, राइट? हम बिना सोचे समझे उनको अगर फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो दैट विल बी हार्मफुल टू अस, राइट? वी विल बी वल्नरेबल टू दिस वर्ल्ड. अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हमारी लीक हो सकती है. हमें क्रिटिकली इवेलुएट करके तभी इंफॉर्मेशन अपनी शेयर करनी चाहिए, और किसी भी इंफॉर्मेशन को रिलाई करने से पहले उसके सारे जो फैक्ट्स हैं, सारे जो पहलू हैं, वो अच्छे से समझ और परख लेने चाहिए. So that is critical thinking. So, my dear educators, let's talk about creative thinking. Creative thinking is a novel way of saying or doing things that is characteristics of 4 components: fluency, flexibility, originality, and elaboration. See, when we talk about creativity, हमें ऐसा सोचना है जो चीजें हटके हो, तो हमें लगे कि ये ऐसा भी हो सकता है, राइट? तो क्रिएटिविटी जो है उसमें कोई बंधन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये होगा कि नहीं होगा. और जब उस क्रिएटिविटी को हम प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आते हैं, दैट इज कॉल्ड innovation, right? So my dear educators, we need to foster our students creativity as well. So now let's talk about decision making. Decision making helps us to deal constructively with the decisions about our lives. हमारे life से related, चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे कोई भी इन्वायरमेंट, हम आउटसाइड कैजुअल रिलेशनशिप्स जहां पर भी है, हमारे फ्रेंडली सर्कल में भी, कि हम किसी भी डिसीजन को लेने से पहले हम सारे जो उसके फैक्ट्स हैं उनको क्लियर कर लें. It teaches people how to make decisions about the actions in relation to a healthy assessment of different options. हमारे पास different options हैं. जो एक poem है, that the road not taken, right? वो जो रास्ता हमने नहीं लिया, उसमें क्या हो सकता था, क्या हो सकता था कि मैंने ये रास्ता चूज किया, वो नहीं किया, राइट? सो दोनों पहलू को परख लें. अगर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं,
राइट, यस और नो। अगर ये करें तो क्या होगा, अगर ये नहीं करें तो क्या होगा। तो अकॉर्डिंगली अपने फैक्ट्स पूरा एनालिसिस करने के बाद ही वी विल बी एबल टू टेक द डिसीजन। तो ये हमें जो क्वालिटीज हैं वी नीड टू फोस्टर इन आवर चिल्ड्रन, राइट, so that they'll be able to lead a healthy life, right? So here you go, my dear educators. Let's talk about problem solving. Now, what is problem solving? Problem solving कोई मैथमेटिक्स की कोई एल्गोरिदम सॉल्व करने की बात नहीं है, कोई क्वेश्चन का आंसर देने की बात नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज लाइक कोई हमारे पास सामने एक समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका जो समाधान हम निकालते हैं, उसका जो सोल्यूशन निकालना है, वो क्या होगा। ऐसा नहीं कि किसी ने बताया तो वो सोल्यूशन लिख लिया। क्वेश्चन आंसर जो हम एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाले हैं सिर्फ उसी की बात नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना कि ये प्रॉब्लम क्या है, उसका रूट कॉज एनालिसिस करना, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को देखना, और जब उसके सॉल्यूशंस जितने भी माइंड में आते हैं उनको जॉट डाउन करते जाना, और तब ये ओपिनियन नहीं देना कि ये सही होगा या गलत होगा। जितने सॉल्यूशंस आते जाते हैं उनको जॉट डाउन करना एंड critically evaluate those solutions, right? And then coming to the final solution and then implement the same. So problem solving helps us to deal constructively with the problems in our lives. Significant problems that are left unresolved can cause mental stress and give rise to accompanying physical strain. अगर problems को हम छोड़ देते हैं, हम टालते रहते हैं, right? प्रोक्रेस्टिनेशन, टालते रहते, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम पर बर्डन और स्ट्रेस बन जाती हैं। वी विल नॉट बी एबल टू स्लीप प्रॉपरली इवन, कि ये काम रह गया, वो करनी है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, तो वो अधूरे उलझे हुए जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, राइट, उनको, उनकी जो गांठें हैं वो समय से खोल देनी चाहिए, नहीं तो वो पक्की गांठें बन जाती हैं जो कि फिर खुल नहीं पाती, बहुत परेशान करती हैं। तो वी नीड टू टीच दो स्किल्स टू आवर चिल्ड्रन। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो बात करते हैं, जब मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंट स्टेप्स हैं, आगे और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे when we'll be talking about these values separately too in different videos. Identify the problem, then analyze the problem, and then describe the problem, look for the root cause, and developing alternate solutions, right? Measuring the results, implementing the solutions. Solution जब implement भी हो गया तो उसके बाद भी different alternate solutions भी हम कर सकते हैं. This is what we can go ahead with that. Now, coping skills. कोपिंग, अब जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम सॉल्व नहीं करते, तो धीरे धीरे वो स्ट्रेस का कारण बन जाती हैं, और भी स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हैं। लाइफ में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एवरीबडी इज देयर इन द रेस टू विन, आगे फर्स्ट आना है सबको, राइट? स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हर एक चीज का, राइट? टाइम कम है, काम बहुत ही ज्यादा है, राइट? तो उसकी वजह से हम अपना काम पूरा नहीं कर पाते, आगे आगे और बढ़ता चला जाता है, पेंडिंग लोड ये है वो है, रुपया पैसा सबको ज्यादा चाहिए, बिकॉज स्टेटस सिंबल की बात हो जाती है, ये इकट्ठा करना, वो इकट्ठा करना, number of things are there that leads to stress. So coping with stress is really very important. Coping with stress means recognizing the sources of stress in our life, कि स्ट्रेस कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, उसको रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइजिंग हाउ दे इफेक्ट अस, वो स्ट्रेस कहाँ से हो रही है, उसके सोर्सेस क्या है, हमें वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, हमें कैसे एक्ट करना है इन अ वे दैट हेल्प अस कंट्रोल आवर लेवल ऑफ स्ट्रेस बाय चेंजिंग आवर एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, मे बी लर्निंग हाउ टू रिलैक्स। क्या मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मुझे वहां से स्ट्रेस हो रहा है, मे बी मेरे फ्रेंड सर्कल हैं उनके साथ कोई ऐसी बातचीत हो रही है जैसे मेरा स्ट्रेस होता है, मे बी फैमिली रिलेशनशिप में कोई ऐसी बात है जो कि स्ट्रेस का कारण है, मुझे उन प्रॉब्लम्स को, कोई कौन सी प्रॉब्लम है जो ऐसे दिक्कत करती है, उन प्रॉब्लम्स को कब कैसे सॉल्व करें, उनका समाधान करें, उसके बारे में डिस्कस करें, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस। फॉर दैट we need to talk about coping skills with our children. So the next skill, the last 10th skill that has been given by WHO, it is coping with emotions, right? Now, we are human beings. We have different kinds of feeling. We react to the stimulus, to the outside stimulus, and we react accordingly, right? क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, खुशी है, नम्रता है, प्यार है, राइट, सेंसिटिवनेस, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस आर देयर। हम बच्चों को पढ़ाते हैं,
सो कोपिंग विद इमोशंस मीन्स रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस विद इन अस, हमारे अंदर कौन सी इमोशन है, दूसरों में कौन सी इमोशन है, एंड बीइंग अवेयर ऑफ हाउ इमोशंस इन्फ्लुएंस बिहेवियर, ये इमोशन हमारे बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करती हैं। अब मेरे मन में कोई चीज चल रही है, हो सकता है कि मैं गुस्से से बात करूं, क्रोध आ जाए, राइट। और मुझे कुछ अचीवमेंट मिली है, आई एम वेरी हैप्पी, सो आई एम बिहेविंग विद अदर्स अकॉर्डिंगली। तो वो किस तरीके से हमारी इमोशंस हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं और कैसे हमारे रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, वो बनते भी हैं, वो बिगड़ते भी हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो कैसे दे सारी जो स्किल्स हैं interrelated हैं। So intense emotions like anger or sadness can have negative effects in our life, on our health, अगर हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते प्रॉपरली, टाइमली, appropriately. So that is very much important. So apart from it, my lovely educators, if we are here talking about life skills, all the life skills, they are interrelated. हमने जैसे पढ़ा देखा कि जो 10 life skills हैं, ये सारी interrelated हैं. They go hand in hand, right? जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं listening and speaking, they go in hand in hand. जैसे आप ज्यादा सुनते हैं, आपको बोलना भी आता है, यू गेट टू नो अबाउट योर वोकैबुलरी, ज्यादा बोलते हैं, एक्सपोजर होता है, LSR W, सारी स्किल्स जो हैं एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। तो लाइकवाइज दीज WHO के द्वारा की दी गई जो 10 कोर स्किल्स हैं, ये इंटर रिलेटेड हैं। जैसे कि हमने अभी बात किया, इमोशंस हैं, राइट, एक बार गुस्सा आ गया, इमोशंस है, उससे स्ट्रेस हो गई, हमने कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो खराब हो गए, और दैट विल ऑल्सो अफेक्ट आवर थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन हमने ठीक नहीं लिया, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो सब खराब हो गया। सो ऑल दीज स्किल्स, दे आर इंटर रिलेटेड with each other. Together, they are responsible for our psychological competence, build our self-esteem, self-efficacy, and nurture our self-development. So my dear educators, आज के इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है, ये जो 10 core skills हैं WHO की, this will be asked under a lengthy questions. आपको 10 कोर स्किल्स की बात करनी है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल देंगे। और अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, तो सर्टेनली ऑल द लाइफ स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। जो हमने लास्ट वीडियो में नीड्स में डिस्कस किया, जो हमने इन वीडियोस में, इस वीडियो में, आज की वीडियो में, while talking about different life skills, we talked about the importance, you can also talk about that. And apart from it, let's even, because अगर आपके पास क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, मैटर भी चाहिए, ऑलवेज देयर शुड नॉट बी रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स एंड ऑल। सो हियर वी गो, माय डियर एजुकेटर्स, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्किल्स। हर स्टेप पर तो हमने बात किया ही है। देखिए, अगर आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, राइट, सो आज के जो इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, बिजनेस में, कोई भी IT है, व्हाटएवर इट इज, जहां पर भी हम जाते हैं, एंड द एम्प्लॉय में क्या देखता है, ऑब्वियसली सब अपने CVs लेकर जा रहे हैं, तो एवरीबडी इज कॉम्पिटेंट इनफ, आपके पास वो डिग्री है, वो मास्टर्स डिग्री है, वो PhD है, यू हैव गॉट ईच एंड एवरीथिंग, बट उसमें क्या देखा जाता है कि आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, आपकी लाइफ स्किल्स भी परखी जाती हैं, देखी जाती हैं, व्हाई दे आर रिक्वायर्ड। आजकल कितने केसेस आते हैं वर्क प्लेस वायलेंस के, लैक ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रेस के, एंगर के, राइट, एंड टीम वर्क में हम काम नहीं कर पाते, एक साथ मिलके जो है वो काम नहीं कर पाते, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, राइट, वो चीजें नहीं रही हैं। अकेले अकेले बैठ के काम करना चाहते हैं, तो वो सबसे कंपनी तो सक्सेसफुल नहीं हो सकती ना। So these life skills, they are very, very important. So mere academic qualification will not make an organization more efficient or effective, but the employees should also have some employability skills associated with the life skills, which can help them to encounter the troubles in the workplace. So, my dear educators, now, educational qualifications and employability skills, they have nothing to do with the regular problems that arise in the workplace, which can be effectively handled with knowledge and application of life skills. तो छोटी छोटी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको लाइफ स्किल से इफेक्टिवली हैंडल किया जा सकता है। लाइक अगर हम एक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में, आपने साइंस पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, वॉट एवर इट इज, यूर अ मास्टर, आपके पास नॉलेज है, आपके पास कंटेंट है, वो नॉलेज बहुत ज्यादा, वो तो रावण के पास भी था, राइट, बट वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स, लाइफ स्किल्स जो है,
वो होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो उस नॉलेज को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो हम नहीं कर पाते और सिर्फ़ क्या होता है, अहंकार आता है उससे, ईगो आती है दैट आई हैव गॉट सो मच, मुझे ये इतना आता है, मेरे को ये इतना पता है, राइट? सबसे ज़्यादा आता है उतना, राइट? उससे अदरवाइज कुछ प्राप्त नहीं होता। लाइफ स्किल्स enables individual to translate knowledge, attitudes and values into actual abilities। हमारी जो नॉलेज है, हमने जो उसे सीखा है, पढ़ा है, राइट? एक एक पर्सन ने ग्रेजुएशन किया है, एक पर्सन ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एक ने ग्रेजुएशन किया, उसके पास लाइफ स्किल्स हैं, उसको पता है कि मुझे इस नॉलेज को कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना है। तो जिसने ज्यादा नॉलेज हासिल करके पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, पीएचडी रिसर्च भी किया है उसमें, बट द पर्सन इज लैकिंग लाइफ स्किल्स, तो उसका कोई फायदा नहीं है, राइट? सो दैट इज ऑफ नो यूज। रावण से ज्यादा बड़ा और कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता, उससे बड़ा ज्ञानी कोई हुआ नहीं है, राइट? सो you know very well. So, my dear educators, here the behavioral problems among human beings are caused due to कैसे behavioral problem आती हैं? Alcoholism, drug abuse, boredom, right? Rebellious हमारा behavior होता है, disorientation, peer pressure, curiosity, दूसरों को देखते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, वो चीजें चाहते हैं, हम उनको follow करते हैं without जैसे डिसीजन मेकिंग, मतलब हर एक उसके फैक्ट जो तथ्य है हम उसको चेक नहीं करते, हर एक पहलू को देखते नहीं हैं, हम ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं दूसरों को, मॉब को, भीड़ को, क्राउड को, उसी का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। सो inability to tackle emotional pain, conflict, frustration, anxieties about the future, क्या होगा कल को, क्या होगा पता नहीं है, that leads to high risk behavior। हाई रिस्क बिहेवियर इज रियली वेरी फेटल। विनाश काले विपरीत बुद्धि, पता नहीं चलता क्या करना है, कैसा हम डिसीजन ले बैठते हैं, रिश्ते नाते सब टूट जाते हैं, पता नहीं चलता, वो एक छोटा सा पल गुस्से का नहीं कंट्रोल कर पाते तो पता नहीं क्या हो जाता है, होता है, हम सबके साथ होता है। सो व्हेन यंग पीपल दे राइज, हम बच्चों को सेकेंडरी लेवल पर ये जो पढ़ाते हैं लाइफ स्किल्स, इसका एक देखिए मूल मंत्र क्या है। व्हेन यंग पीपल, हमारे जो बच्चे हैं सेकेंडरी स्टेज पर, और हम भी, व्हेन वी राइज अबव इमोशनल इम्पैसेस, जो हमें इमोशनल जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, समझ नहीं पाते, जब हम इससे ऊपर उठते हैं फ्रॉम डेली कॉन्फ्लिक्ट्स, एंटेंगल्ड रिलेशनशिप्स, पीयर प्रेशर, so we are less likely to resort to anti-social or maybe high risk behavior। हम इस हाई रिस्क बिहेवियर से, वल्नरेबिलिटी से हम बच जाते हैं, राइट? सो माय लवली एजुकेटर्स, make sure you go through other videos also to know more about life skills। so ये यहाँ पर एक आपके सामने I have shared with you importance of life skills के लिए कि कैसे इफेक्ट करती हैं 4H अप्रोच जो है, head, heart, hands and health, right? हमारे ब्रेन को, थिंकिंग स्किल्स की हम बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारी जो है हमारी, सोशल स्किल्स ऑल्सो, हार्ट से रिलेटेड सोशल स्किल्स, इंटरपर्सनल रिलेशन, हमारे रिश्ते, राइट? हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हमारा हेल्थ, फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ, एंड ऑल्सो हैंड्स, हाथों से जो काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, मोटिवेशन होता है, सेल्फ एस्टीम होता है, right? Different work करते कैसे, they all are affected। so my lovely educators, now you will be able to write pretty well about the importance of life skills, about the 10 core skills that have been given to us by WHO। so if you want to know more about such skills, such innovative techniques, and you want to update yourself with what is there in now in the curriculum, like maybe you have completed your B.Ed, your M.Ed program years ago, but you have to keep yourself updated, what is there in the syllabus now, what you have to teach to the students. To teach the 21st century learners, you have to be a 21st century educators. You need to learn, you need to research, you need to be a co-learner. For that, stay tuned, my lovely educators. Like, share and subscribe Mentoring the Mentors. Wishing you again a very happy new year. Have a nice day. Thank you from Meenakshi Nerula.